Hello guys, welcome to LawPutra YouTube channel. So here is today's topic is the difference between the bill of exchange and the check. In a day-to-day life, we have naturally and almost definitely have gone through the two negotiable instruments. That is the bill of exchange and the other one is check. So here I will try my best to summarize the difference between the two and the meaning of the two in a very concise and the simplified manner. Okay, so starting from bill of exchange. Okay, so let me illustrate bill of exchange with a simple illustration. There are three parties. Suppose there are three parties A, B, and C. So what happens is A is the creditor, B is the debtor, and C is the third party. Okay, so what happens now? Let me explain you. ए ने क्या किया, कुछ टाइम पहले कुछ अमाउंट लोन दिया, डेट दी, किसको दी? बी को दी. ठीक है. अभी क्या होता है कि कुछ टाइम बाद आफ्टर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड सी को अपना पेमेंट लेने वो ए के पास जाता है. सी अपना पेमेंट लेने ए के पास जाता है. ए क्या करता है? बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करता है. बिल ऑफ एक्सचेंज पे अपना साइन करता है एंड ही इशूज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. सो जो क्रेडिटर है और क्रेडिटर ए इज़ द ड्रॉअर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज. और वो किसको इशू करता है? इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन, इट इज़ अ डायरेक्शन इंस्ट्रक्टिंग बी टू डू अ पर्टिकुलर पेमेंट टू सी. और जो बी होगा वो होगा ड्रॉई ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज. और जो सी है द पार्टी द पार्टी हु विल रिसीव द पेमेंट, दैट इज़ द पेई. So I hope I'm able to convey my things. That is the three main parties of bill of exchange: the drawer, the drawee, and the payee. Drawer is the one who has basically issued the bill of exchange, and drawee is the one who is the acceptor, who will do the payment, who has taken the debt previously. And C is the third party, that is the payee, who will get the payment now. Okay, so this bill of exchange is definitely a transferable instrument that can be used at the place of money, or basically just for the it was a type of negotiable instrument. ठीक है, कि उसको हम एक पार्टी, सपोज मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज हमने क्या किया, क्रिएट किया, तो अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बी ही इसके लिए लायबल है. मतलब सी अगर बी तो पेमेंट करेगा ही करेगा, लेकिन वो किसको करेगा? इट इज़ डेफिनेटली अ ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, कि उसको टाइम टू टाइम एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर सकती है. ठीक है, तो ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई. This is the concept of bill of exchange. Now moving towards the check. What is the difference between the bill of exchange and check? Check is also a type of bill of exchange. क्या होता है कि in check a particular party, that is the drawer, who is the customer of the bank, directs the bank to do a particular payment from his account to whom? To the payee. Drawee is the bank who will do the transaction on behalf of the customer, that is the drawer. बैंक क्या है? वो ड्रॉई है. वो क्या करेगा? वो ड्रॉअर यानी कि जो कस्टमर जिसका अकाउंट उसके बैंक पे है, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे पे यानी कि जिसके लिए चेक इशू किया गया है उसको कर देगा. ठीक है. सो चेक ऑल्सो हैज़ द थ्री पार्टीज, द ड्रॉअर, ड्रॉई एंड द पे. Drawer is the one who is issuing the check. Drawee is the bank who will do the transaction on behalf of the drawer. And payee is of course the one in whose name the check is issued, जिसको payment मिलेगा. ठीक है. So these are the main definitions. Now dealing about it, statutory obligations, statutory implementations. So check is defined under section 6. Check is defined under section 6 of the Negotiable Instruments Act 1881. ठीक है. There also the same definition was stated that it is an unconditional order directing the bank to do the payment on behalf of the drawer. ये क्या एक अनकंडीशनल ऑर्डर है कि जो बैंक ड्रॉई है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉअर के बिहाफ पे क्या करेगा? पेमेंट करेगा. किसको करेगा? पेई को करेगा, जिसके नाम पे चेक इशू किया गया है. सेक्शन 5 जो है वो क्या बताता है? वो बिल ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, वो बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन बताता है. इट ऑल्सो स्टेट्स द सेम थिंग कि इट इज़ ऑल्सो एन अनकंडीशनल ऑर्डर डायरेक्टिंग द ड्रॉई to pay a particular amount of money to the payee.
ठीक है. सो दीज आर द स्टैट्यूटरी वर्ड्स. नाउ अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. सबसे पहले अगर हम बात करें हु हैज़ द ऑब्लिगेशन टू पे. सो एंड हाउ इज़ इट इम्प्लीमेंटेड. So in the case of check, the check is implemented only and only on behalf when we demand it, when we get to reach the bank. But bill of exchange is paid either after on demand or after a specified time period. बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है. देर इज़ नो सच. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज क्रॉसिंग. सो बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई क्रॉसिंग नहीं होती है. एंड चेक्स आर क्रॉस्ड. क्रॉसिंग ऑफ चेक इज ओनली द वर्ड यूज फॉर checks now, not for bill of exchange. Third one is stamping. It is very important to understand that bill of exchange need to properly stamped through the Indian Stamps Act 1899, but there is no such condition required in the case of checks. Checks definitely need not to be stamped. After that, there comes to the obligation of the grace period. What happens is there is no such grace period required. There is no such grace period provided in the case of checks, but the check should be duly presented to the bank within the specified period. But in the case of bill of exchange, the 3 days grace period is provided in the case of bills of exchange. Now what happens is the validity. The checks are valid for 3 months, but there is no such time period particularly specified for bills of exchange. It completely depends upon the parties. Now summing up the main points, I hope I was able to convey and clarify the difference between the two. What happens if the check gets dishonored? So the dishonor of the check is an illegal crime. The disgrace of a check is an illegal crime that was punishable under section 138 of the Negotiable Instruments Act. लेकिन there is also a well defined procedure that I will like to quote in the short. अगर क्या होता है कि सपोज देर इज़ नो सच मैलिफाइड इंटेंशन ऑफ द ड्रॉअर कि ऐसा कुछ बाउंस हो जाए, चाहे क्या उसका पेमेंट उसे ना करना पड़े, ऐसा कोई मैलिफाइड इंटेंशन उसका नहीं था, लेकिन फिर भी चेक बाउंस हो गया, तो अभी ड्रॉअर इज़ नॉट द सोलली लाइबल. ड्रॉई को क्या करना होगा, ही हैड टू take a check return note from the bank which should specify कि अगले 15 दिन में the check was returned and now अगले 15 दिन में the drawer has to do the payment to the drawee. अगर वो 15 दिन में पेमेंट कर देता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इन केस नाउ द टाइम पीरियड इज 30 days. अगर वो 30 days में भी पेमेंट नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली द ड्रॉई हैज़ द राइट to move to the court and sue him. So and he is punishable with the 2 years imprisonment and either for forfeiture or the property, and basically there are the certain things that the financial forfeit or both. It means fine or financial forfeit or imprisonment of 2 years. These are the punishment provided under section 138 of Negotiable Instruments Act. Supreme Court has already stated these facts in various judgments. Okay. So that's how I would like to sum up my video with these words, that I hope I was able to convey my words. I was able to make a clear difference between the two. If you have any doubts, you can definitely comment in the comment section and we will address it. Thank you.